Hi, hello, namaste to all my listeners. I'm your host, Sarthak Varshney, and I welcome you all to the Balls of Steel show, where you get an insight into the business mindset of the entrepreneurs. Dhandho ni Soch. Our today's guest is Mr. Nikhil Juneja and Mr. Aditya Gupta. Hi, Nikhil. Hi, Aditya. Hello, Sarthak. Hi Sarthak. Hi. Hi. So, how are you? How's the lockdown coming around? And I guess the lockdown खुल गया है, so कैसा चल रहा है? Yeah, it's going very well. Very different from what we expected 2020 to be. But Right, yeah, I think initially I was in denial when it started. I just didn't want to accept कि lockdown हुआ भी है. But yeah, right, I think 10-15 days and I accepted कि lockdown हो गया है और right. उसके हिसाब से we have to change everything. So yeah, that's how it is coming. I can understand. So, Nikhil and Aditya, tell me, what is the business that you're running because of which we're gonna say that you have got the balls of steel? Mm. I am first of all, I really like this name, Balls of Steel. Even talking about it, I feel inspired. So the business that we Okay. are into is leadership transformation. That's how the vision started. But we also realize that Mm-hmm. leadership transformation happens from personal transformation. So now we are an organization which is working with many organizations in helping them develop their leaders, which is our B2B model. And our B2C model is also where we help individuals through the coaching journey, their life coaching. So yeah, I think because we believe that to become a good leader, you have to first become a good human. Right, So, right, right. so the three things majorly that we do are leadership transformation, uh, team Mm-hmm. transformation, and also all employee engagement solutions for organizations. I get it. I get it. So, this was the basics of what the business you're doing. So, I want to dive deep into your journey, and I want to know the exact journey, how you started, and what was the idea, and what all struggles you faced to come till the point at which you are right now. Okay, so I think yeah, I will talk first, and then 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 we'll hear it from Aditya as well. For me, Okay. I always had this dangerous question running in my mind, and I'll tell you why this it's dangerous. Also, the dangerous question is, am I playing too small? And this question would never let me sit in peace. I always kept thinking, am I making a bigger impact in the world? And whenever I heard people share their problems, what they were facing with leaders, they say that when you become a leader, you also become a topic for dinner table discussions. Right. So with my friends, whenever I used to hear any problem happening anywhere, whether it is in their family and their office, I always kept thinking, how can I make a difference in these people who are leaders and who impact so many other people? So Right. one was that, and the other was my own expectations of myself. That am I playing too small, and am I making a bigger impact? Am I? So I wanted to cater to a larger audience. And one day, I did the same mistake that most overexcited people do, and that was Mm-hmm. leaving my job and Okay. without any planning, and then figuring out what to do. Yeah, and after that, it has been a crazy journey of ups and downs. And on the way, also met Aditya. So yeah, I think now Okay. I'll let Aditya talk about that first, and then we'll together add certain things. Okay. Okay. Sure, definitely. So I remember meeting Nikhil at his favorite place on Valentine's Day, 14th February 2017. Definitely, this was not the kind of Valentine's we were expecting, neither me nor him. Definitely. Yeah. And I remember meeting him through a mutual friend at his favorite place, Okay. Barista, at MG, Gallery on MG, Okay. the The same same place place where we all three met. where all three of us met. Yes. And the context behind Oh my our God, that must meeting have was lots of memories. sorry, is there Right. something?
तो That barista has a lot of memories then. ओ या हमारे यहाँ जो भी आया है बरिस्ता, पहले हमने उनको बरिस्ता बुलाया, बाद में कंपनी बुलाया। सो दैट्स द फर्स्ट हमारे लिए आई थिंक फिल्टर चेक जो हमारी कंपनी में चलता है। हमारे लिए शगुन बन गया है वो। Yeah. See, I met Nice, Nikhil there, and now we are working together. You met us there, and we right, work together. और right. जिससे हम बरिस्ता में नहीं मिले, we haven't worked together. Now that has Oh my happened. God. So, so Okay. coming back to our discussion, the context behind me meeting Nick was we met through a mutual friend, and I told that friend that yeah, I've been working in my family business for some time. I've been working in this e-commerce field for some time, but यार वो किक नहीं मिल रही है काम करने में जो चाहिए. So I Okay. shared with her one of my childhood dreams. It is to inspire people, stand up on a stage, give some inspiring, motivating speeches to captivate audience, help someone realize their potential, and help them bring out the best in them. And she only said one statement. See, I don't know if that will help you or not, but I know one guy. He's a great guy. Go meet him. I don't know how things will work out, but I am sure something or the other might this might be a start of something good. I'm like, ठीक है, इतना कुछ try कर लिया, एक और कर लेते हैं. I go meet Nikhil. We have a Right. small chit chat. He tells me about what the kind of work he's been doing. I share my history and possible future. This is what I think of Right. doing. And he then shared his vision Mm-hmm. for the kind of world he sees in the future and the kind of change he wants to bring in the corporate world and the community as at large. Right. And I was really inspired by that, and I immediately thought that this is something I also want to do in the long term. And then he shared an Mm-hmm. opportunity that why don't you come down to the office, let's see what we can do together. And it's been a long journey, a very steep learning curve for me as a fresher to learn from his experience, he mentoring me in and out in my personal and professional life. And I think it's been a beautiful more than 2 years journey till date. Okay. That sounds really interesting. And many more things I can think of that I would love to know when I dive more deeper into it. But yes, that is amazing. So that means that you've been into the business for the past 2 years then, right? Yeah, along with Aditya, yeah, when this journey started, uh, so when it started, but and just to add on here, whatever Aditya said, he got inspired by what I was doing, but I also got inspired, completely inspired with his energy and the things that he wanted to do. So yeah, I thought he's as crazy as I am, so why not? Let's try. And then yeah, from that time, the values that he's added, the ideas, yeah, we did have a lot of conflicts obviously because हम थोड़े से different personalities हैं. And उसके बाद धीरे धीरे realize हुआ कि चलो let's see कि इसको हम compliment कैसे कर सकते हैं एक दूसरे के लिए. And maybe in your questions further we will also talk about the problems that we have together and then how we manage that. Right, right. So, uh, talking about from where you guys started. So, Aditya, you came from a family business background, and Nikhil, you left your job. So, what was the thought process going in your head? Because Aditya, जब आप घर छोड़ रहे होगे या business छोड़ रहे होगे, घर वालों ने कुछ तो बोला होगा कि यार घर का धंधा है कर लो या anything of that sort. बाहर क्यों जाना है? And Nikhil, I don't know if you had this thought or not because definitely I've met your son as well, and there's this factor with every job person ki yaar, we have a security when we're doing a job and there's a risk when I'm going to do a business. Yeah, yeah. So what was the thought process that you both had respectively in for the question that I put up? So a small disclaimer there. Both Right. of us come from a family business background. I've had my own shares of Okay. business. Nick has also Okay. started her new business, managed family business, and then started his own firm as well. So, Okay. Hanji, I'm Yeah. sure this is coming as a surprise, but he also has a lot to share. And I remember particularly one story which I would urge Nick to share, which was when he was
going for a delivery in a truck and met with some accident, and then that was the eye-opening accident that happened. So I would really urge Nick to share that story first, and I'll go on with mine later. Okay. Yeah. Yeah. Okay. I think. So yes. When rightly said, I also was into a business family, or actually, it was a poultry farm, and Okay. those days, poultry was one of the very good businesses. एंड आई बचपन से यही प्लान था कि आई विल जॉइन माई डैड्स बिजनेस, और वहाँ पर इतनी सारी मुर्गियाँ हैं, इतनी सारी मुर्गियाँ अंडे देती हैं, अंडों से और मुर्गियाँ आएंगी और एक्सपैंड होता रहेगा, लाइफ सेट है। Okay. और एक्सपैंड करना हुआ तो साथ में एक ब्रेड की दुकान खोल लेंगे, उसके बाद बटर की दुकान खोल लेंगे। Okay. So life set life set me. Right. Exactly. Right. After my education, that is what I did. I joined my dad's business and I was very excited. Like a workaholic, was traveling around, क्योंकि energy तो बहुत थी, until that Right. accident happened. Or yeah, I was going for this delivery to Rajasthan, Alwar, and Okay. that was a day when कभी मैं ड्राइव करता था, कभी ड्राइवर ड्राइव करता था. Now the driver was driving and I was sleeping on the seat next to him. But थोड़ी देर में ड्राइवर भी सो गया. Yeah. Oh. So yeah, so that accident happened, and you know how then a lot. Like Aditya said, yeah, it was eye opening. A lot of things Right. happened. Nobody supported. I was lying on the road. खुद ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा. Imagine उस हालत Oh, में. oh shit. Yeah, हड्डियां टूटी हुई थी. Um, Fuck. Okay. yeah, but then that happened and all that. Then my family came there. फिर वहाँ से दिल्ली लेके आए वापस, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ. 3 months I was on bed rest and I was wondering कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब what am I doing with life? क्या मुझे पोल्ट्री फार्म ही करना है सारी जिंदगी, या मुझे कुछ और भी करना है? And हाँ जी. somehow in those 3 months I became open to some more possibilities. And some friends were Hmm. coming. They said, "Yeah, हमारे साथ job कर ले थोड़ी देर. Let's see क्या Hmm. होता है." And then I moved out. Started. I joined one of my friend in a job. वहाँ से एक job, दूसरी job. And my dad was again waiting. तो भैया वापस कब आएगा? When will you come back to your business? लेकिन हाँ. शेर के मुंह में खून लग चुका था. Right. Right. मार्केट में अवेलेबल हो गए थे हम. And I think from then I was doing this job, and I was then I already I think what worked very well was I already had that business mindset because I'd seen my dad since my Right. childhood, and then the jobs that I was doing, उसमें भी I also Right. kept thinking कि इसको और innovation कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, and all that. So I think वहाँ से फिर I moved into trainings, I moved into leadership work because धीरे धीरे interest मिलता रहा. So Right. one of the learning I have is when you surrender to what you're doing and you start enjoying what you're doing, and you keep your mind open, then you automatically start moving towards what is good for you and what you really want to do. वन ऑफ द थिंग आई रियली बिलीव इज कि ये सारा सिस्टम जो बना हुआ है ये फियर के ऊपर बना हुआ है. Exactly. पहले मैं जॉब करने जाना चाह रहा था तो फैमिली कह रही थी तेरा दिमाग खराब हो गया, व्हाट आर यू सेइंग, तेरा बिजनेस है तो जॉब क्यों करेगा? उसके बाद जब मैं हाँ. जॉब में सेटल हो गया और इतना ग्रो करने लग गया एंड आई वांटेड टू लीव माय जॉब एंड ओपन माय ओन बिजनेस, देन माय फैमिली सेड आर यू मैड, तू सेफ जॉब छोड़ के वापस जाएगा? लाइक मतलब क्या डिसाइड कर लो आप लोग यार, पहले आप कुछ और बोल रहे हो, आप कुछ और बोल रहे हो. हाँ. 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 और तो हमारी फैमिलीज में ऐसा भी होता है कि मतलब अगर पेरेंट्स की बात ना मानो तो वो रिश्तेदारों को बुला लेते हैं यार. और हाँ. तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल. सेंटर में बिठा के मेरे को बोला ये देखो जी हमारी तो सुनता नहीं है, अब आप ही समझाओ इसको. मतलब आपका फैमिली रोस्ट हुआ है जो एक हर हाँ, भारतीय एंटरप्रेन्योर का आई गेस होता है किसी न किसी पॉइंट पे या जिसका दिमाग खराब हो रहा है. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट a lot of people that I coach, एक ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि निखिल whatever you're sharing and all of this and ये सब तो कर लेगा, मतलब हम दुनिया को संभाल लेंगे लेकिन अपनी फैमिली को कैसे संभालेंगे, एक बार वो बताओ. So I think this is something that everybody faces. Aditya also faced that. Right, 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 right. I get it. I get it. So Aditya, that was his story. What's your story? Mine is, yeah, a lot similar to his. Okay. Uh,
My family business is about 25 years old, and of Wow. course, uh, अच्छा खासा settled है, network है, the earning is good. You just have to sit there and expand it. So there is no loss. आगे जाना है आपको, पैसा तो आ ही रहा है, उसको पैसे को और इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करना है आपको. आई डिड ट्राई Right. देयर. मैं बैठा गद्दी पे, संभाला, गया पहले ऑफिस एम्प्लॉयज के साथ, स्टाफ के साथ सीखा काम. बट वहाँ कहीं ना कहीं आई रियलाइज यार कि आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर मनी. पैसा आ रहा है, चलो अच्छी बात है, अब तक आया है और भी आएगा आगे. बट वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना Hmm. कुछ आई फेल्ट देयर इज समथिंग मिसिंग यार. माय लाइफ कैन नॉट बी ओनली अबाउट जस्ट buying stuff and then selling to people and then getting cash out of it. Where is the meaning involved? कहाँ है कुछ मैं पैसे से बढ़ के करूँ ज्यादा. मैंने कहा यार यहाँ तो कुछ चल नहीं रहा है. लेट मी ट्राई फॉर माय मास्टर्स. मैं एमबीए करूंगा किसी इंडिया के टॉप कॉलेज से. एंड Right. वहां जाके मे बी आई गेट अ गुड जॉब. आई गो आउट देयर, लर्न सम स्टफ एंड देन create some meaning out in the world out of what I do. Right. So the moment Right. I shared this thing with my family, they retaliated. एंड उनका रिटेलिएट करना बनता था क्योंकि बचपन से मैं हरामखोर बच्चा रहा हूँ. पढ़ाई में मन लगता हाँ. नहीं है. 1-2 जगह कॉलेज में बैक और Okay. आई थी, एंड उसके बाद 2 साल बाद आप आके कह रहे हो कि आपको एमबीए करना है, वो भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस से. एंड Right. देन उस चीज़ पे काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुए हम, आर्ग्यू हुआ कि कोचिंग जॉइन हाँ करोगे, हाँ. ये करोगे, वो करोगे. 1 साल ट्राई किया, नहीं हुआ. अगली साल दुनिया भर की मेहनत की, जो पागलों की तरह मूवीज़ में दिखाते हैं ना लिख के, कि दीवारों पे लिख-लिख के पढ़ रहा है, छत पे चार्ट पेपर्स लगा दिए, वो सब पढ़ रहा है. आई डिड दैट एंड दैट आल्सो Wow. ब्रॉट आउट द रिजल्ट. आई हाँ हाँ. आई गॉट अ गुड परसेंटाइल इन कैट, स्नैप, ये सारे जितने मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं. आई गॉट फीचर्ड इन द न्यूज़पेपर एंड आई गॉट कॉल्स फ्रॉम Wow. सम ऑफ द टॉप बी स्कूल्स. तो घर वाले खुश. और जैसे निक मेंशन्ड, घर वालों की नहीं सुनता है तो रिश्तेदार को आके बुलाया जाता है. मेरे साथ भी काइंड ऑफ सिमिलर यही हुआ. पहले जो घर वाले और रिश्तेदार भी मना कर रहे थे, वो ही अब हाँ. अखबार में फोटो देख के कॉल कर रहे हैं, मुबारक हो गुप्ता जी, मुबारक हो गुप्ता जी. ये है वो. बट somehow Okay. कुछ कुछ हुआ. आई डिड नॉट हैव दैट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस विद मी, सो दैट वाज वन ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट्स in the group discussions and the interviews. So I could not clear some of, Right. I could not convert some of the calls. I did some convert some of them, but वही ड्रीम ये था यार, करना है तो बेस्ट से करना है, या तो बिल्कुल नहीं करना है. तो मैं वहाँ नहीं गया. Right. ठीक है. देन आई मूव टू दिल्ली. यार चलो जो पहली जॉब हाथ में आती है वो करते हैं. वो किया. Hmm. वहाँ भी. और one of the good things that turned out was when I shared my dream with my family and they retaliated. And there was something that was building up inside me, call it aggression, suppressed anger keh lo. I was able to channelize that energy and build that sort of a work ethic within myself, which I had never seen, which my family had never seen. And I channelized the same energy within my first job, and I was able to break their सेल्स रिकॉर्ड्स. जो बंदे वहाँ पे 2 साल से काम कर रहे थे, मैंने 6 महीने में आके उनके सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दिए. एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू वंडर भाई ये लड़का Wow. कौन है. एंड ऑल ऑफ दिस जो भी भसड़ हुई घर में, आई ओनली थैंक माय फैमिली टिल डेट कि अगर आप मेरी बात को आसानी से मान जाते तो मैं रिटेलिएट हाँ. नहीं करता, हमारे बीच में वो झगड़े नहीं होते, एंड आई वुडंट हैव फाउंड दैट हिडन एनर्जी इनसाइड मी. So that was the biggest learning for me out of this experience. So whatever happens to you, try and make Use it in a positive use direction. it in a positive way. Yeah, like they say, life does not happen for you. Life does not happen to you. It happens for you. So find the meaning out of it. क्यों हो रहा है? Right. So probably for that, I would say that you can only connect the dot when you look at the past. You can't connect the dots looking in the future. As Steve Jobs rightly mentioned. Yes. Right, 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 right. Perfect, perfect, perfect. That's an inspiring journey for from both of you. But अब यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि uh, many entrepreneurs they face a lot of issues when they have to start their own business. Okay, किसी को फंड चाहिए मतलब फंड एक्चुअली हर किसी को चाहिए होता है, ठीक है. बट किसी के पास पहले से होता है, कोई अपनी जॉब से सेव करके आता है, कोई घर से लेता है. एंड दैट इज ऑल्सो स्ट्रगल फॉर मेनी पीपल. किसी को वीसी ढूंढना पड़ता है.
So what was it for you? Because since I guess both of you started this almost together only, and here and now, and both of you have a business background also, business family business background, and आप दोनों ने जॉब की थी, तो आप लोगों ने बूटस्ट्रैप किया, साथ में पैसा लगाया, कैसे किया? यार हमारा एक एक्चुअली सिंपल लॉजिक ये था कि अ, और ये हमारा अभी भी प्रॉब्लम है, हम पैसे के बारे में ना ज़्यादा सोचते नहीं है, बट ओके। कॉल इट स्पिरिचुअलिटी और वट एवर वी बिलीव दैट जब हम वैल्यू देंगे तो पैसा आ जाएगा. So initially we thought that, and we still have that plan कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारा हम्म। मेजर फोकस क्वालिटी में है. एंड ओके। so we see a lot of organizations, lot of companies which have grown a lot, but उनका quality impact हो जाता है. And राइट। this actually has been a uniqueness with a lot of our clients. They say that we come to you because we get quality the same, and this is the quality that we don't get in those big organizations which have been established for a long time. तो हमारा हम्म। ये शुरू से क्लियर था कि हम धीरे धीरे शुरू करेंगे और क्वालिटी ऐड करेंगे. एंड फॉर मी पर्सनली आई ऑलवेज बिलीव कि I will work with people with whom my values are matching. And राइट। and when I say value, I appreciate the fact कि हम personalities अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे values और vision same होने चाहिए. तो we are different personalities, we work together, we utilize each other, लेकिन हम धीरे धीरे क्वालिटी में मिलके ग्रो करते हैं. तो हमें एक्चुअली में पहले ये ख्याल जरूर आते थे कि यार बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बट आई बिलीव दैट wherever I am, I will start from there with whatever I have, and that's what we हम्म। did. And automatically, when we did good work, our client gave us more business. Our clients gave us references. For the हम्म। first 2 years, Sarthak, we did not do any marketing. We sustained our business with zero marketing, only by the references we were getting from our clients for the good work that we were doing. तो उसके That's- बाद जब हमने सोचा कि चलो हम थोड़े सेटल हो गए, अब थोड़ी मार्केटिंग करेंगे, एंड दैट्स व्हाट वी, बिकॉज वी द सेविंग्स दैट वी हैड, आई थिंक दैट हम्म। वाज अनदर पॉइंट कि हमने ये भी सोचा था कि हम ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, पहले सेविंग करेंगे, और जब हमें लगेगा कि हम सेटल हो रहे हैं, अच्छे से क्वालिटी दे रहे हैं, दैट्स व्हेन वी हम्म। एक्सपैंड एंड स्टार्ट डूइंग मार्केटिंग. सो वी स्टार्टेड डूइंग दैट लेटर. So that's how we started. And in fact, ओके। I have ओके। another point to add there. One of the राइट। major, I would say, the strong points that was in the business was that राइट। Nick had a very good face value in front of the clients with which he had worked with earlier. So the moment they got to know that he started something of his own, and the client started हम्म। reaching out to him, and we applied the same values, the same principles, like Nick said, quality over quantity. We focused on giving the clients 10x value, and the client loved it so राइट। much. Not only did they give us repeated business, but also they referred us to somebody else. And जितना काम हमारे पास 1.5 2 साल में आया है, given the fact that हम्म। we are a few of us managing the whole team, हमारे लिए राइट। इतना ही बहुत है अभी. अगर वो एकदम से इतना बढ़ जाता ना, we wouldn't have been able to hold that kind of work as well. जितना हमारे पास आया, we sometimes find it hard कि इतना सारा कुछ चल रहा है, कैसे कैसे मैनेज करेंगे. So all of that we were able to do it क्योंकि जो भी काम आया हमने उसे दिल से किया. We gave the client the राइट। next value. They loved us so much कि अगली बार ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती थी, पहले हमारे पास फोन जरूर आता था कि do you want, let's talk about this. Yeah, yeah. राइट। 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 इनिशियली हम कुछ एनालिसिस भी कर रहे थे, और हमें रियलाइज हुआ कि यार अगर हम किसी को रीच आउट कर रहे हैं तो वो हमें बिजनेस नहीं दे रहे हैं. तो क्योंकि and that's when we realize, as in our business, trust is very important. So why not build from the people who already trust us, and when they refer us to somebody else, trust and credibility is already there. राइट। राइट। So I think आई that गेस दैट इज व्हाई दे से दैट बिजनेस के लिए नेटवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है. yeah, More, it's just references that will build your business. Sometimes marketing won't even do that, but references से बहुत काम हो जाएगा. yeah, And I guess your business is actually proving it when we see to it. yeah, That's great. So now, from the things that we have touched, यहाँ पे दो तीन चीजें आती हैं. So Aditya, once you said that आपके रिश्तेदारों ने भी कहा था, and
एंड आपको भी एक प्रॉब्लम दिख रही थी अपने साथ में दैट यू डिडंट हैव एनी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ विच यू weren't एबल टू क्लोज द बी स्कूल्स. एंड अभी जैसे निखिल के साथ आपने एक और बात बताई दैट निखिल हैड अ फेस वैल्यू. So that means Nikhil's experience in the corporate sector gained him a face value over the period of time. So these are two contrasting things if I look at it from the bigger picture. One है आप में से एक के पास corporate experience था, एक के पास नहीं था. ठीक है. How has this affected in your mentality towards the business of here and now? Because see, corporate से आप एक different mindset लेके आते हो even though आपका family business था. And as Aditya, like आप सिर्फ business थे and then you did a study and then आप you dived into this. So आपका mindset वहीं पर ही था. I wouldn't think that वो ज़्यादा divert हुआ होगा, but then it was still in from the business perspective. So give me more insight on this part. Well, that is a very, very interesting question, Sarthak. So, Thank completely you. agreed. I did not have a corporate experience. I still don't. But I did Hmm. have a business mindset and a business background. और जो बनिया का खून होता है ना धंधा चलाने का, Exactly. वो था, वो अभी Right. भी है और वो कहीं नहीं जा रहा, वो रहेगा. Right. And I, in fact, think this experience जो भी हुआ है, ये business वाला Hmm. and having no corporate experience has Hmm. complemented my role in here and now, and I'll tell you why. Right. We are not a corporate firm. Right. Rather, I would like to put it that way. If we are going to corporates and giving them an experience, making a difference for them, we of course need to understand how they work, how their functions Right. work, how their teams work. And I do not have Right. that experience, but I do have Nick, who has more than 15 years of experience doing that. He taught me from his Wow. experience what worked well, what did not work well. Right. Number one, that Right. gives me a ton of years of hard work and going through that experience and learning it on my own. Right. Number two, how did that in fact benefit me Hmm. from a lot of people who have been into corporate jobs for a long long time. सबसे एक complaint Hmm. आती है, and I've seen that in a lot of people. They've become Hmm. robots. I can understand. अपना कुछ नहीं करते. They've become they've built themselves into that process so much कि बंदे robot बन गए हैं. कुछ अलग से innovation नहीं कर रहे हैं. They just want to live paycheck to paycheck. महीने के एंड में सैलरी आ जाए, हम लोग खर्च कर लें, बजट बना लें, चल लें, ठीक है. That's all they want. And if I had Right. been in that corporate sector, maybe मेरा भी mindset वैसा हो जाता. Right. So I, from the perspective I have about it, from the experience I need of the corporate sector, Nick is mentoring me for that. And Hmm. for all the molding which I do not want the corporate life to give me, I do not have that. Hmm. Hmm. However, I can put the business mindset and that lot of energy and the young blood in here and now to see how we can change the mindset of the people who are in the corporate sector, that you, just because you are living paycheck to paycheck doesn't mean your life becomes mundane. You can do a lot more within the process that you are in. So जो kind of amalgamation निकल के आता है ना इनका, it's a little tricky to understand but also very fun to work with. I Okay. I would also love to hear what Nick has to share his insights on this question. Yeah, yeah. I think it's a very good question. And so Sarthak, one of another thing with our organization is जब हमने start किया उसके बाद we also ensured that the people who Hmm. are working with us are from various diverse background and experiences also. So in our Right. organization, we have facilitators and coaches who are also vintage in this industry, for 35 years of experience and all that, who are our Right. mentors and all of that. And we also have the young blood, so Right. it get us a lot of energy. So I think that works very well with us. We have the millennials who tell us what are the new things happening in the market, और जो एक्सपीरियंस हम लोगों को ऑलरेडी पहले से है उनको भी हम सेम एक्सपीरियंस को किस तरह एक न्यू पैकेज में डाल के आज की जनरेशन के लिए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. So one of that Hmm. thing is also working with us. And when you specifically asked Aditya about that experience, risk taking की तो हमें आदत पड़ी गई थी और था भी वो. We also Right. started another business, which was Okay. started from scratch, and we got into corporate events as well.
Uh, Right. and that then Aditya was managing completely by himself, where he got a team, where a lot of things happen. So politics, gossip, credit issues, सारा कुछ जो होता है एक organization में वो सब कुछ होने लग गया. And Okay. yeah, Aditya managed all of that very well. Uh, तो जो चीज़ें हम सिखाते हैं वो हमने खुद यूज़ करी. And Right. we have those success stories of actually implementing. So now Hmm. आदित्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि कॉर्पोरेट में गया है नहीं गया. ही इज मैनेजिंग ऑन हिज ओन ऑल द इश्यूज. Right. Right. So after I have heard both of your stories, what I can like on a personal opinion, if I would put this up, मुझे ऐसा लगता है कि more than the learning कि हम लोग किताब से पढ़ें या फिर किसी से किसी स्कूल में जाके पढ़ें, what matters is we are experiencing it. या Aditya experienced something from you. He learned from your experiences and he applied it there. And जैसा अभी आपने बताया event management के business के बारे में, so Aditya got to learn everything while doing, right? या Without going there. And Nikhil, आपने तो job की थी, so you had the job का experience there. So if we can put it in the very simplest word कि हमारे को experience से ही सीखना है, no matter जो भी हो जाए. अबे धंधा करना है तो धंधा करके ही समझ आएगा धंधा कैसे होगा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू. मतलब हम ये भी so the workshops that we do उसमें भी हम इंश्योर करते हैं, we use this term called GG. GG मतलब Right. ग्लोबल ज्ञान. अच्छा. तो ग्लोबल ज्ञान तो बहुत सारा अवेलेबल है मार्केट में. But हाँ हाँ we हाँ हाँ actually, हाँ. and we are an organization which believes in experiential learning. तो हमारे जितने Right. वर्कशॉप्स भी हैं सार्थक, they are very very experiential. Right. हम लोग इस तरह के इंटरवेंशंस डिजाइन करते हैं कि लोग उन चीज़ों को एक्चुअली में सिमुलेशंस के थ्रू, रियल लाइफ चाहे रियल लाइफ सिमुलेशन हो या डिजिटल सिमुलेशन हो, people Mm-hmm. experience those things, then they work on exact projects after the workshop, and that's when we certify them that you know what, now you're ready to handle people, now you're ready to manage teams, now you are ready to become a part of a team, you're ready to become a leader. So yeah, experience, you're right. Exactly. Right. In I fact, have. Sarthak has attended a lot of our workshops. Nick, why don't we hear from him what he thinks of our workshops? So I don't know behind the camera सार्थक का प्रायोरिटी क्या होता है इसमें. नहीं नहीं Hey, I मैंने know one बताया of the priorities. I know one of them. I would not want to say that here. देखो वो वो सीन ही अलग है. But yes, I have told this before as well, and one of the many most eye-opening experience was, I guess, covering your event at गुड़गांव में गुड़गांव में जो होटल में होता है. I'm not remembering the name of the hotel. I guess it was Leela or something. I don't Double remember. tree. But नहीं डबल ट्री से पहले एक जो हुआ था नियर द दिवाली टाइम. सो वहां पे जब आपका एक्सपीरियंस था एंड दिस वाज फॉर बॉस्टन साइंटिफिक, राइट? Mm-hmm. एंड इस वाले इवेंट में दिस वाज जिसमें हमने विलेज बनाया था एंड आई सॉ द विलेज थिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज. एंड जब मैं उसकी स्टोरी कंपाइल कर रहा था ड्यूरिंग द एडिटिंग प्रोसेस, आई वाज लाइक दिस इज अ फकिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज द वे यू गाइस बिल्डेड दैट एक्सपीरियंस कि आप पहले विलेज बनाओ एंड किसी को पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट डाइविंग इनटू द प्रोसेस, टेकिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यू. एंड एट द एंड जब वो पूरा विलेज बन के आता है फ्रॉम दो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स, कोई किसी ने स्कूल बनाया है, किसी ने पंचायत बनाई है, किसी ने हॉस्पिटल वाला हिस्सा बनाया है, एंड देन आपने उसको कंपाइल करके स्टेज पे रखा है एंड देन यू आर टेलिंग देम कि यार दिस इज योर कंबाइंड एफर्ट जिसकी वजह से विलेज बन के आया है. एंड आप लोग सिर्फ घुस गए थे विदाउट इवन रियलाइजिंग आप लोग किसके लिए काम कर रहे हो व्हेन यू शुड नो. सो दैट इज अ वेरी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस एंड आई पर्सनली बिलीव कि हमारी सोसाइटी में ऐसे ही होता है. बचपन से ही हमारे को ट्रेन कर देते हैं कि बॉस पहले स्कूल में ए वन देन क्लास 10th देन क्लास 12th देन इंजीनियरिंग प्रॉब्ली डॉक्टर ये वो. सो हम लोग खुद का दिमाग लगाते ही नहीं है. सो इट्स जस्ट द इंस्ट्रक्शन दैट वी आर फॉलोइंग. सो इफ एंड उसके बाद सिर्फ रोना रोना होता है कि यार आई एम स्टक एट जॉब, आई एम डूइंग दिस, मुझे समझ नहीं आ रहा है. The simple rule is at least start thinking what you want to do and then start doing it. There's Yeah, no other thing. So yeah, that was one of the very eye-opening experiences. And the other thing that I learned from the workshop is that बहुत energetic होती है. yeah, चाहे जान हो या ना हो, जान फूक देता है वर्कशॉप में yeah, अपनी. absolutely. So that is
definitely one thing I've experienced, and that does matter a lot because सामने वाले में energy तभी आती है जब हम energy डालते हैं, right? Yeah. So that is definitely something I've learned from the workshops. Although मैं cover कर रहा होता था behind the camera, but मैं बहुत कुछ देखता हूँ behind the camera, okay भी. I know that. I know that. Right, right. So let's go ahead and हमें ये तो मालूम पड़ा कि आप लोगों ने शुरू कैसे किया एंड हाउ यू गाइस स्टार्टेड एंड वहाँ पे माइंडसेट कैसा रहा. बट अब कमिंग डाउन टू दिस वन थिंग व्हिच यू बोथ पॉइंटेड आउट रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, ठीक है, दैट पार्टनरशिप में इश्यूज हुए एंड ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन निखिल आपने एक बात कही थी कि पर्सनालिटीज डिफरेंट हो सकती हैं बट वैल्यू सेम होनी चाहिए. Yeah. सो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप लोग थोड़ा और हाईलाइट करो बिकॉज द जनरल माइंडसेट आउट देयर इज पार्टनरशिप टूटती है. Hmm. Partnership टूटती है because of the conflicts. And my personal mindset before you guys dive in, so that you might have some point जिसको आप highlight कर सकोगे, is that partnership definitely टूटती है अगर आप clarity नहीं रखते हो and when you don't have the conflicts. Yeah. I personally believe conflicts are very very important. आपको Hmm. लड़ना, गुस्सा करना, चिल्लाना जरूरी है, Yeah. चाहे वो पैसे को लेकर हो, पर्सनली हो, कुछ भी हो. Yeah. तभी वो सारी बातें बाहर आती हैं एंड देन आल्सो यू रियलाइज किया सामने वाले की चीज क्या है. बट देन द वे यू हैव पुट इट नेक्स्ट, आई रियली रियली लव दोस वर्ड्स दैट more than the personalities, it's the values that needs to be same. So tell me something more about it. So vision, value तो हमारे same है. Some of the values like we are working for the client, so we have to give them 10 times more value. One of the value is that our inner work is very important because what we do, how we expand our own consciousness, and the development we do for ourselves is how we can do it for the organization as well. So some of these values are same, and then personality differences. लाइक सो मैं मुझे अपनी खुद की बुराई करनी पड़ेगी यार, इसमें थोड़ी सी वो थोड़ा चैलेंज है. बट आई एम अ विजनरी और उस विजन के चक्कर में मैं अपने विजन में खो जाता हूँ. सो आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम. एंड आदित्य हाँ. ऑन द अदर हैंड इज वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड. ओके, तो हमारे बीच में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो ये आता है. आदित्य लाइक निखिल आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए कि आप जो कर रहे हैं पहले वो तो कर लेते हैं, कहाँ पहुंच गए आप 10 साल के बाद वो करने के लिए, आज कर लें. एंड तो उसमें ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आता है कि यार ये मेरे मतलब मैं मेरे विजन को ऐसे बोल रहा है कि सीरियसली नहीं ले रहा है. एंड सो और आदित्य इरिटेट हो जाता है कि यार आपको ये करने के लिए बोला था और आप वो नहीं कर रहे हो. सो सो आई थिंक दैट थिंग. सो इनिशियली ऑब्वियसली जब वो कॉन्फ्लिक्ट्स आए तो आई थॉट ही इज रिजेक्टिंग माय आइडियाज, ही थॉट आई एम रिजेक्टिंग हिज आइडियाज, और उस चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए. बट every team or every relationship, they go through these stages, and in workshops we talk about that. We call it forming, storming, norming, and then performing. And Wow. and Sarthak, well, like you also mentioned कि जब ये प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरे को एक्सप्रेस करना जरूरी है, चीखना चिल्लाना. दैट्स द स्टॉर्मिंग स्टेज. जब हम मिलते हैं शुरू में तो हम सब अपना अपना अच्छा साइड दिखाते हैं, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप और इट्स अ टीम, सब बड़े अच्छे बनते हैं. Right, लेकिन उसकी right, बात हो जाती है हम कब तक अच्छे बनेंगे, रियलिटी बाहर आती आती है. And right. when the storming stage happens and ego clashes happen, personality conflicts happen. So one of the value that we follow in our organization is we express, we create conflict. कि अगर हमें बहुत दिन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है तो हम समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है यार, मतलब या तो कुछ किसी ने गिव अप कर दिया या वो समझ नहीं रहा है. तो then we'll poke each other, let's sit and create conflict. चलो किसको क्या बुरा लगा है, let's express it, let's talk about it. And चाहे हमें Right. घंटों बात करनी पड़े, but we make everybody express everything that they have in their heart, so that we get to know each other better, and then we come on the same page, and only then we move on. So we have some of the wonderful principles of team effectiveness. कि टीम्स को अकाउंटेबल कैसे रखा जा सकता है, टीम्स को क्लोजर कैसे रखा जा सकता है, टीम्स में we how can we ensure that there is a mask that we are wearing, but when the mask opens up, what is the reality, the authenticity that we have. So जो चीज़ हम we are coaching and teaching our clients on authentic leadership and authentic team roles, we follow all of that in our organization, and we're proud to say that we practice what we preach. So our beliefs, our goals, all of them may be different, but at the core level, when all these masks Mm. are over, of religion, politics, background, then we are all same at the core level. Yeah. So Wow. when we discuss and we open up,
we connect even more than what we were connecting before that conflict. Wow, that's really really great. So Aditya, on this note, I want to ask you कि ईगो क्लैशेस होते हैं, ठीक है, सब हर जगह होते हैं, बट बहुत सारे बिजनेसेस में क्या होता है, ईगो क्लैशेस के बाद बिजनेस काफी बार ठप हो जाता है, बंद हो जाते हैं कि उसने ये बोला, उसने वो किया, फलाना ढिमकाना, बिजनेस खत्म. व्हाट डू यू सजेस्ट कि कैसे मैनेज कर सकते हैं एंड हाउ कैन दिस बी ओवरकम, बिकॉज आप लोग कैसे करते हो तो समझ आ गया, ठीक है, बट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? I couldn't agree more with whatever Nick said. And in fact, this is हम्म. one of the things why our relationship is more stronger than ever. And to answer your question, how we can avoid these conflicts in the other organizations. Is that your question? नहीं, वहां पे मतलब हो गया नहीं, वहां पे देखो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है ना, ईगो क्लैश हो चुका है, नाउ these two partners are not ready to face each other. Hmm. बिजनेस जाने वाला है, दोनों को नुकसान होने वाला है. व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या किया जाए? ये तो काम है, दे शुड रीच आउट टू अस यार. Yeah. हम ये बता देंगे तो हमारे पास आएगा नहीं धंधा फिर. So I'll answer that question with the recent example, a recent incident that हाँ. happened between the both of us. We've राइट. been working together for the past 2.5 years, and of course, जब आप राइट. किसी के साथ 2 ढाई साल से काम करते हो, so the ways of working they evolve, and they have to. राइट. If they are not राइट. changing, if they are not evolving, that means, dude, you're not doing something to improve yourself. You just हाँ जहाँ आप जी. 2 साल पहले थे आज भी वही हो. So the ways of working changed, and it's a human tendency कि we make perceptions about the other person's actions. उन्होंने कुछ किया, मैंने दिमाग में कुछ बनाया, मैंने कुछ किया, उन्होंने दिमाग में कुछ बनाया, and we for some reason are so afraid to express our authentic self, and authentic being the key word, authentic and the intention behind saying it. For example, मैं आपको कुछ बोल सकता हूँ, मेरा intention उसका कुछ और होगा. The way it comes out on the table is different, and the way you take it is different. राइट. And that's one of the major reasons why misunderstandings happen in a lot of communication. So how we sort that out, we in a conflict we always use I statements, and this is something I've learned from Nick. हम्म. मुझे अगर कुछ बुरा लगेगा, I will not say Sarthak, you did this, you should have done that instead. I will say Sarthak, because this happened between us, I felt that हम्म. way, and this is what I'm feeling right now. Now, as my, you can say, accountability partner, you have the हम्म. responsibility to hold that safe space for me and make me feel better. And when you do it for राइट. me, I will do it for you. And when I share how I feel, you will also open up, and you will also open up to share how you felt because of my actions. And can I, as a mature, responsible person who values relationships, can hold that space for you and make you feel better, so that the relationship improves. And हम्म. one of the major reasons why it fails is because only one person is willing to do that cannot happen. Tali ek haath se nahi bajti. It takes two to tango. Both of them need to be responsible and agree ke boss, giving up is not an option. That is the last thing that will be done. Usse pehle, have we tried each and everything to sort it out? If we haven't, let's see what we haven't done it, and let's try it. And that is one of the major reasons why जो 2 साल पहले मैं जिन निक से मिला था और जिनसे आज आज जिनको मैं जानता हूँ, our relationship is stronger than ever. That's amazing to hear, business that's running on partnership, that's really amazing, because जितने केस मैं सुनता हूँ टाइम, ये टूटा वो टूटा, एंड उसके बीच में ऐसी अच्छी खबर सुनने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है दिल को. दिस इज रियली रियली गुड. Let me दिस इज गुड. share something here just to add on to what श्योर. Aditya said, श्योर. and this could also be a mantra. And I'm going to talk about the hypocrisy with which we humans operate. I hope that you're able to take back something insightful from this podcast and apply it in your life to be a better version of yourself and add to your Dhandho Soch. If you know someone whom you think should feature on my podcast and has a very inspiring entrepreneurial journey, then do drop me a DM on my Instagram, SarthakVarshney. Yeah, that's me.
I'm the founder of SW Clicks, and SW Clicks is the producer of this show. You can find me on Facebook or LinkedIn as well with the same name. If you're willing to listen to more of such unheard, inspiring stories of the entrepreneurs, then don't forget to follow us by pressing that follow button on your podcast screen. Thank you for being such an amazing audience. Keep learning, keep growing. We'll be back soon. See ya. Uh, Definitely. you know, when we judge ourselves when we make a mistake, and when we judge others when they make a mistake, is very, very different. And there is a lot of hypocrisy there. If I Hmm. make a mistake, how do I explain myself? I judge myself on my intentions, and I say that, you know what, I didn't mean to do that. मेरा intention ऐसा नहीं था. So I'm sorry. Hmm. Yeah. So I forgive myself on my intention. कि मेरा intention ऐसा नहीं था यार, sorry गलती हो गई. But when I judge the other person, I judge them on their action. And I say, yaar, why did you do this? Why did you say this? So I'm judging others on their action, but I'm judging myself on my intention. Hmm. तो ये hypocrisy है. Can I also forgive others for their intentions and think यार उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा सोच लिया या जो भी है, but maybe he didn't mean to do that. And that's when the forgiveness starts, and that's when, we can actually get into a conversation. लेकिन अगर मैं खुद को intentions पे माफ कर रहा हूँ, दूसरे को actions पे ही judge कर रहा हूँ, तो like you mentioned about this situation जहाँ दो लोगों की लड़ाई हो रही है, तो वो कभी sort out नहीं होगी. Absolutely. Absolutely. So this is another beautiful way of putting that we need to understand the other person's perspective, the point of view, and that is where the intention comes in. Yeah, yeah, Nice. I really, really love this new way. I mean, यार मेरे को तो पता है when I'm talking to you and the different entrepreneurs, the thing that I see out there is that everything is just the same. And the biggest beauty of it that every entrepreneur has a different way of putting it. Like the way you put it, it's the intentional hypocrisy. I would name it the intentional hypocrisy. Nice. I like that name also. But yeah, it's the intentional hypocrisy कि हम लोग खुद को intention में judge करें. And I guess यार प्यार मोहब्बत में भी यही होता है. बहुत रिलेशनशिप ब्रेकअप भी इसीलिए होते हैं because खुद को तो intention पे judge कर लिया, सामने वाले को action पे judge किया. yeah. So yes, this is one beautiful thing that you have quoted, and I love this thing. Okay, so moving ahead, uh, here and now, में पिछले 2 साल में like on your in your journey, what is the biggest failure that you guys probably have faced, and how did you deal with Okay, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you. it? Hope to see this online very soon. Let us know. Share the link. मेरे को डाउट हो रहा है अभी इतना बड़ा फेलियर कौन सा हुआ है. So, Right. I think failures. What do I call it? हमारा तो actually काम चलता ही इस पे कि हम we fail, we learn, and we move ahead. Uh, Right. so I don't know what should I call the biggest failure. नहीं, But आपके business में because no matter आप you're telling the same thing, you're preaching the same thing, but then what was the biggest failure that you faced? I think one of the biggest failure for me personally, and again, whatever we call here and now is people. So I can talk about me personally. I think one of the biggest failure for me personally, I feel, is that when a lot of business was coming, I was traveling a lot, and because of my passion, I got so happy and overexcited and busy with a lot of workshops happening across India, Mm-hmm. across globe. So traveling and doing all of that. So I did compromise on a lot of time that I was not spending with my team. और उसमें ये रियलाइज होने लगा धीरे धीरे कि कहीं पर हमारे विजन अलग अलग डायरेक्शन में, विजन तो सेम है लेकिन हम थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. Right. So that when I realized, I ensured that I need to come back and we need to do some regular meetings to ensure, or maybe regular get-togethers. ये meeting word भी मुझे पसंद नहीं है. Regular get-togethers with my team to ensure that Right. we are on the same page. Where are we going? Where are we going individually, and where are we going as an organization? ये question Right. हमारे हर get-togethers में होना चाहिए, और we started doing that once again. So yeah, I think, Okay. yeah, for me it was that. Aditya, what would you like to add into it? Again, I'm also Any other struggling with that failure? answer because as such we haven't had any such massive failures that you
here in the business Mm-hmm. world ऐसा कुछ होता है. We've always had those tiny little mishaps here and there. One of those Nick mentioned, कि those having those regular internal checks. For me, I would say the failure would be the loss of certain business proposals, or proposals as in certain projects, because Mm-hmm. of, you could say, sometimes the proposal not being able to send in time because someone is traveling, someone is not available. So only these minor internal mishaps that keep on happening. But again, like Nick mentioned, we have started doing the regular internal checks, keeping in tune with what's working well. Let's continue that. What's not working well? Why do you think we did not get this project? And this is one of the things which I love about it. एंड जो भी एक दो Mm-hmm. मिसहैप्स हुए छोटे-मोटे, वहाँ से हमने सीख के ये स्टार्ट Mm-hmm. किया. आफ्टर एवरी वर्कशॉप, बी इट ट्रेनिंग, टीम Mm-hmm. बिल्डिंग और एग्जीक्यूटिव कोचिंग or a group coaching, we sit Right. down together as a team and have a small brainstorming session. What worked well, what did not go well, Mm-hmm. and what can we do differently Mm-hmm. the next time to make it even better. Right. And what worked well in the workshop, let's continue doing that. What did not work well, why it did not work well, how can we improve it? And is there something that we can do as a surprise factor the next time for the client, so that ये Mm-hmm. एकदम surprise हो क्या है वो, we weren't imagining that. And Right. जब वो एक बार रेगुलर हैबिट में आ जाता है ना, तो इतना कोई बड़ा फेलियर होने का चांस और कम हो जाता है. So I think maybe this Right. is why Nick and I struggling are so much struggling to answer this question, is because we've always had those regular internal checks जिससे हम कोई ऐसा massive failure अब तक hit नहीं किया है. Yeah, and That's great. I'm actually very troubled with this question जिसमें हमें struggle भी हो रही है क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर कोई बड़ा failure नहीं हो रहा है तो कोई ऐसा तो नहीं है कि we are playing very safe and we are not taking any risk. So that is what is happening inside me right now. I'm thinking. Okay. Uh, Okay. क्योंकि I don't want to actually play too much safe. तो Right. सो आई थिंक बट उसके साथ साथ व्हेन आई एम रिफ्लेक्टिंग मुझे आंसर ये आ भी रहा है कि एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई ही बहुत सारे फेलियर्स के बाद है. और जो So भी could tell me some of the failure. आप बताओ किसी failure के बारे में. Like tell me one of the journey यार of that failure. जो भी आपको याद हो. Like see आपका accident, that is definitely one thing. That's an eye-opening thing. I या wouldn't call it a failure, but yeah, that's something eye-opening. What else? सो सार्थक एक्चुअली दैट्स अ गुड क्वेश्चन क्योंकि उन फेलियर से जितना सीखा है. सो आई रिमेम्बर इन 2000 तो मैंने ना जॉब 2 बार छोड़ी है एक्चुअली. एक बार Okay. एक बार छूट गई ठीक है. पहले और इतनी बुरी तरह फेल हुआ था कि दोबारा चला गया था जॉब करने के लिए. ठीक Okay. ये बताओ. Okay. है. Okay. I want to know this. Yeah, so the first time when I left my job again, that like I spoke about the overexcited person without any planning left my job. So now I Right. actually train people on how to leave their job nicely. कि मतलब क्या करो कि मेरे जैसा हाल ना हो. तो Right. so the first time when I left it, obviously there was no planning. There was a lot of inner work that I had to do. And 3 साल तक I was just failing. मैंने multiple business किए and I was just failing and failing. And I was thinking कि क्या हो रहा है यार, मतलब समझ नहीं आ रहा है. Why am I failing? मैं इतना positive इंसान हूँ, positivity भर भर के भरी है, confidence भर भर के है. But why am I Hmm. failing? Hmm. Nothing was working out, and I kept asking this question to myself कि यार, and I lost everything. They say ना, like hungry stomach, empty pockets and broken Hmm. heart. ये तीन चीजें Hmm. आपको लेसन सिखाती हैं और ये तीनों हुए मेरे साथ उस 3 साल So में. this was before your marriage? जब हाँ. आपको empty stomach, पैसा भी गया, गर्लफ्रेंड भी गई, या and सब कुछ गया. तो हाँ. what was the business? Like just give me a one example, probably एक business जो आपने start किया बंद हो गया. ऐसा क्या था? मैंने रेस्टोरेंट खोला था. मैंने क्या बात है. रिक्रूटमेंट एजेंसी खोली थी. और ट्रेनिंग फर्म खोली थी. मैंने इवेंट मैनेजमेंट भी किया था तब. और Okay. उसमें लॉसेस हुए. मैंने पार्टियां करी लेकिन पैसे नहीं आए तो लोग मेरे पैसे पे पार्टी कर रहे थे और मैं डेट में जा रहा था. So all Oh my that. God. Yeah. But one ठीक है. after another, and I kept thinking that why am I losing? And Hmm. uh, और जब ये सब कुछ खत्म हो गया ना, तब मैंने सोचा कि यार, Hmm. okay, now that I've lost everything, maybe यहाँ से मुझे ऊपर ही उठना है. uh, Right. उसके बाद भी I lost and I went into debt and I was like यार मतलब अब क्या हो गया. And then
and in an organization we keep talking about this, and yesterday also me and Aditya we were talking about it. The Right. I was asking a wrong question. I was asking why is it happening to me. तो वो Mm-hmm. गलत क्वेश्चन है. I go into a victim mode when I think about that. Then I Right. my question that instead of why is it happening to me, what is it teaching me? And Mm. then I thought, ऐसा क्या है जो I've lost everything and I'm still losing. So what is it that I have not lost yet? What is it teaching me? Right. And Sarthak, then I realized the biggest lesson of my life. I had हाँ जी. the answer came. I had not lost my ego till then. एंड आई Wow. रियलाइज्ड कि मैं जो भी कर रहा हूँ आई एम डूइंग इट टू प्रूव इट टू समबडी एल्स. मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आई वांट टू प्रूव इट टू इधर माय फैमिली और सम फ्रेंड्स और समबडी एल्स दैट व्हाट आई कैन डू वेल. एंड दैट वाज कलरिंग माय माइंड सो मच कि मैं यही नहीं सोच रहा था कि मुझे क्या करना है, व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू. So I think with that failure for those 3 years, which I was almost going into depression, losing everything, and I didn't know why is it happening. Eventually, when I reached that bottom point, I realized that there are lessons that I have to learn from all the failures, and yeah, Mm. that's when everything started picking up. I forgave everybody. I started feeling very light, and then I could focus on my dreams. That's what happened. That is an amazing experience in that case. Honestly, that is a very thought-provoking and insightful experience that I would say. Wow, because I read somewhere, I don't remember the book. I guess this was Subtle Art of Not Giving a Fuck, that Mark Manson has written that you need to forgive. Probably it was that only, or maybe I'm quoting it from the wrong book, but it has been written that you need to forgive and let go. Because Mhm. when you do that, you start feeling light and you start living for yourself. And this next thing that you mentioned, this is very true. हम लोग बहुत सारे काम सिर्फ स्टेटमेंट्स के लिए करते हैं, Yeah. जहाँ पे हमारे को सिर्फ और सिर्फ प्रूव करना है, एंड शायद से that is another reason many people fail a lot of times. Yeah. That is, wow, that's really amazing. I'm speechless after this. But yeah, so अब मुझे यहाँ पे एक चीज पूछनी है कि निखिल, आपने बताया that you went into debt, and so it was the cycle like job, trying of business, debt, getting back to job, recovering from debt, and then starting the new business. Was this the cycle? Yeah, actually you can say that because उसके बाद जितना टाइम मैंने जॉब करी मैं उधार चुका रहा था. EMI. Okay. And but then I think I remember the dangerous question that I keep asking myself. That जैसे ही मेरा डेट क्लियर हुआ, मेरा वो क्वेश्चन वापस आ गया, am I playing too small? Am I making a bigger impact in the uh, world? So sometimes I think I keep telling myself, निखिल शांति से बैठ जा यार कभी, मतलब why do you keep doing this? But yeah, that started happening, and then I came back to making a bigger impact on the world with new learnings, with new awareness, and then now I know how what kind of people I want with me, what mistakes I did earlier, which I will not do again. I'm emotionally even more stronger. So yeah, I know my values more. wow. Wow. Aditya, would you want to add something to this? ऐसे ही थोड़ी मैंने इनको अपना मेंटर चूज किया है, तो आपको क्या लगता है? ऐसे मत बोलो, ईगो अच्छा, वापस आ जाएगी मेरी. नहीं, अब मुझे आपका ना मतलब ऐसा डायलॉग याद आ रहा है जो मुझे बचपन में बोला गया था कि बेटा आ जाओ, you'll get free mentorship and free life coaching. मतलब Yeah. Yeah. अब मुझे नाइस, नाइस. अच्छा, सो आदित्य, आपने यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट की थी, एंड which was proposal not being sent in time. So this is a very small thing, but then this definitely made an impact जब आपका probably कोई business close नहीं हुआ या you lost a lead or anything. But ऐसा बहुत सारे businesses में होता है for some or the other reason. Probably let's say not enough team, or maybe let's say कि people not doing multiple jobs या फिर one man doing a lot of stuff. So इस execution में जो issues आते हैं, what are your opinions? How can one deal with them? या how can any business, या तो देखो उसके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, या तो लोग होते हैं, लोग काम चोरी कर रहे होते हैं, whatever the fuck happens, like what is your opinion? कैसे डील कर सकते हैं हम इसमें? बिकॉज Thanks ये for this. छोटे छोटे इश्यूज होते हैं
जिनकी वजह से बिजनेस बहुत बार काफी कुछ लूज करते हैं। हम्म। जी बिल्कुल, नो डाउट, बहुत सारे बिजनेस लूज करते हैं। इनफैक्ट हमने भी काफी बिजनेस खोया है इस चक्कर में। एंड हम्म। का जवाब भी है हमारे पास, हमने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया था। यू रिमेम्बर राधे? हम्म। हाँ जी, डेफिनेटली, हाउ कैन आई फॉरगेट हिम। सो निक एंड आई बहुत सारी चीजों में डिफरेंट भी हैं और बहुत सारी चीजों में सेम भी हैं। हमारी पर्सनालिटी हम्म। कहीं कहीं जगह मैच भी करती है और कहीं कहीं जगह मतलब जो हमारे लाइक इट्स अ ह्यूमन पर्सनालिटी, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं। राइट। And this happens with everybody. You might have some strong points which will complement my weaknesses, and my weaknesses can also complement somebody else's strength. So as a राइट। team, we sat down one day and figured out भाई किसका क्या strength area है, किसका क्या improvement area है. And in our हम्म। team, Radhe had one of his strongest areas as he was an execution engine. We noticed हमने आज तक इसको जितने भी काम दिए हैं वो हम्म। उसने किसी ना किसी तरह करा ही लिया है। चाहे मुझे आलस आ रहा है, वो डंडा देके मुझसे काम कराएगा, चाहे किसी और टीम मेंबर को आ रहा है, वो उसको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करा के काम कराएगा। So while we were busy doing everything, we put Radhe in charge. You are the राइट। driver for our team. This is our monthly to do. This is what we need to achieve by the end of the month. You need to get the work done out of us anyhow. And that worked pretty well for us. And a lot of businesses, they don't have money problem. They where they lack is जो उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, they don't हम्म। utilize them in a proper manner. यार अगर किसी बंदे का एग्जीक्यूशन अच्छा है, तुम उसको प्लानिंग में लगाओगे तो प्लानिंग इज नॉट हिज फोर्टे, पुट हिम इन एग्जीक्यूशन। किसी का कोई ऑर्गेनाइजिंग में अच्छा है, यू कांट एक्सपेक्ट देम टू बी द एग्जीक्यूशन इंजन ऑफ द कंपनी। एंड दिस इज वेयर अ हम्म। लॉट ऑफ businesses fail to recognize their blind spots. And the idea for a business and even a person is to reduce that window of blind spot as much as possible. You cannot fix what you cannot see. And the moment you see it, then awareness is the first step to start fixing it. Utilizing the available resource to the maximum extent is, I would say, one of the solutions for this. Yeah. Wow, this is an amazing way to put it. Awareness is the first step to finding solution. Love this. You ये know, क्या बातें बोलते हैं यार, मजा आता है मेरे को कुछ चीजें सुन के। इसमें मुझे याद आ रहा है कि हाँ जी। राधे का ना फ्यूचर ड्रीम है, उसको पुलिस में जाना है, आईपीएस बनना है। तो Yeah. हाँ। तो हमने उसको प्रैक्टिस यहीं से करा दी। वो रोज सुबह हमारे टूडू के पास खड़ा हो जाता था लाठी लेके कि हाँ भाई बताओ क्या हो रहा है। अच्छा। Okay, okay. That's nice. That's nice. Acha. So Nikhil, one more thing which I picked up from the points that you were putting in, that there was this point जहाँ पे you were traveling and you felt that you're not spending enough time with the team. हम्म, So I'm gonna put up a situation in front of you, okay? And I wouldn't mind saying this, but I picked up the situation and I've somewhere felt it also. जिसमें क्या है कि I don't know if you've seen the movie Upstart or not. हम्म, So Upstart is a movie based on some startup, वो उसको सिचुएशन स्टोरी दिखाता है। हम्म, बट नाउ जो मुझे बताना है कि बहुत बार क्या होता है, लेट्स से आप दोनों ने साथ में शुरू किया, ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो स्टार्टअप करने के लिए होते हैं, एंड दे थिंक हम साथ में करेंगे, दोस्ती आ रही है, करेंगे करेंगे। एंड हर किसी के स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं। बट द बट देन व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से जो बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा है या फिर जिस बंदे का पूरा दिमाग चल रहा है, जिस बंदे का कोर आइडिया था, राइट, ही इज इनटू प्लानिंग, ही इज इनटू ऑपरेशन, चेकिंग द ऑपरेशंस, ही इज इनटू टॉक्स विद वीसीज, एंड लेट्स से जो टेक्निकल बंदा है, सो he has to work at the office, take care of that other technical stuff or maybe anything of that sort. yeah, तब जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, आपने तो मैनेज किया कि यू केम बैक एंड यू हैड अ टीम मीटिंग, बट बहुत बार इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से एक दरार पड़ जाती है बिजनेस में, जहाँ पे लोग बात भी नहीं करते उसके बाद, हम्म, राइट? सो हाउ डू यू सजेस्ट कि पहले तो इससे बचा जाए, ठीक है? हम्म, बिकॉज मैं जैसे देखता हूँ, मैं तो मेरा सीधा फंडा है कि सीधे सीधे समझो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, yeah, आपको समझ आएगा। अगर नहीं आता है देन आई तो सी दैट कि तुम्हारी प्रॉब्लम है। टेक्निकल वाला अगर ऑपरेशंस वाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ सकता एंड देन ही इज लाइक कि भाई यू डोंट अंडरस्टैंड कि मेरा काम कितना इंपॉर्टेंट है। yeah, दैट दीज आर टू डिफरेंट फील्ड्स इन माय ओपिनियन। yeah, आपको बस एक लेवल तक समझ आएगा बट देन एग्जीक्यूशन आप ही का हो जाएगा ना। yeah, yeah, yeah. टेक्निकल वाला ऑपरेशंस नहीं जाएगा, ऑपरेशंस वाला टेक्निकल नहीं आएगा। सो इस माइंडसेट की वजह से जो इश्यूज आते हैं, व्हाट वुड यू वांट टू से अबाउट दैट? Sure, I think it's a great question, Sarthak, and most organizations and businesses face this challenge.
And Right. the best solution and one of the best things that anybody can do in a partnership or a business is set healthy boundaries. एंड बाउंड्रीज का सिंपल मतलब यही है कि जो जिसका काम है उसमें वो दूसरों से आइडिया तो ले सकता है, लेकिन उसका करना क्या है वो उसी पे छोड़ देना चाहिए हमें. इफ Hmm. इफ आई हैव अ टीम जिसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर निखिल की स्ट्रेंथ है, निखिल ये कर रहा है, आदित्य के वो स्ट्रेंथ है वो कर रहा है, और बाकी लोग भी हमारी जो टीम में है उसमें हम उन्हें Hmm. आइडियाज तो दे सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो उन्हीं का होना चाहिए. उसके बाद आई एम नो बडी टू से कि तुम वो मत करो या ये मत करो, बिकॉज अगर उनको उस Hmm. चीज के लिए असाइन किया गया है तो वी हैव टू ट्रस्ट दैट दे विल टेक द बेस्ट डिसीजन. Hmm. तो वो बाउंड्रीज जो हम एक दूसरे की क्रॉस नहीं करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मोस्ट फैमिली बिजनेसेस फेल, क्योंकि उसमें ना बाउंड्रीज क्रिएट नहीं हो पाती हैं जब हम रिश्तेदारी में काम करते हैं. कि Right. we keep crossing boundaries, and if we create healthy boundaries with each other, that okay, अगर मुझे पता है आदित्य की स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइज करने की है और उसने बोला है कि ये काम इस हिसाब से होगा, उसके बाद अगर Hmm. आदित्य मैं उसको अपने आइडिया दे सकता हूँ, लेकिन और उसने मेरे आइडियाज ले लिए, उसके बाद भी जो डिसाइड वो कर रहा है आई हैव टू सपोर्ट हिम विद दैट. Right. सो दैट्स अ बाउंड्री आई विल Right. रिस्पेक्ट. और जो मेरा काम है, जहां पर अगर मेरे को विजन है, कोई आइडिया है, और मैं बोल रहा हूँ कि हमें ये चीज एग्जीक्यूट करनी है, एंड आदित्य आई वांट यू टू ऑर्गेनाइज इट, तो आदित्य विल ट्रस्ट द आइडिया दैट निखिल हैज, एंड आदित्य विल यूज Hmm. हिज स्ट्रेंथ टू इंश्योर कि उसको किस तरह सेट करके हम आगे बढ़ाएंगे. सो बाउंड्रीज Okay. इज द आंसर. हेल्दी बाउंड्रीज एंड रिस्पेक्टिंग Okay. बाउंड्रीज. Okay, I would dive a bit more deeper because this is coming from the personal experience, ठीक है? हम्म. And हमने भी like me and my friends we are planning something and we are trying to do something. There's no concrete stuff as of now, but हमने ये देखा कि जिसका जो specific field था हमने उसको assign किया, healthy boundaries were set. But then sometimes we feel कि someone is being incapable of something. हम्म. Let's say someone is good at something, but still he's not able to execute it. हम्म. And then we have to पंप इन कि भाई ठीक है हम भी हेल्प करते हैं हम भी घुसते हैं देन हम जब दिमाग लगाना शुरू करते हैं देन और चीजें निकल के आती हैं एंड देन वो दैट टास्क डजंट गेट्स कंप्लीटेड हम्म. सो हम वी मतलब आई तो पर्सनली आई एम प्रोबब्ली स्टिल गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम एंड ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन व्हाट वुड यू सजेस्ट मतलब मैं कर रहा हूँ डेफिनेटली बहुत सारे लोग करते होंगे कहीं ना कहीं Yeah. व्हाट वुड यू सजेस्ट अबाउट दिस प्रॉब्लम आई मीन इस स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या कर सकते हो आप सो वेयर राइट मुझे इसमें एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं. वन, आई डोंट नो हाउ कंफर्टेबल पीपल आर इन योर टीम टू आस्क फॉर हेल्प. हम्म क्योंकि बहुत बार ये भी होता है कि विलिंगनेस टू हेल्प तो है, लेकिन आस्किंग फॉर हेल्प बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो सो पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, आर दे एबल टू आस्क फॉर हेल्प कि भैया देखो मेरे से ये नहीं हो रहा है, अब तो मुझे हेल्प चाहिए. और वो हम्म सही टाइम पे होना चाहिए. पीपल और जो आपने अगर प्रोजेक्ट प्लान बनाया है और उसमें इनफ हम्म गिव इनफ टाइम फॉर प्लानिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक गलती जो हम करते हैं कि वी आर एग्जीक्यूशन में इतना फोकस करते हैं कि प्लानिंग टाइम मिस कर देते हैं. राइट तो जो भी आइडिया आया उसको पहले प्लानिंग में डालना है, और उसके बाद असाइन हम्म करके कि किसने किसने क्या क्या किया है, एंड देन रेगुलर चेक्स टू सी हम कहाँ पहुंचे हैं, किसको हेल्प चाहिए. सबसे बड़ा राइट प्रॉब्लम वहां पर आता है कि सो व्हाट वी फॉलो इज, हमने जो एक मंथली प्लान भी बना लिया है, उसमें वी हम्म डू अ वीकली रिव्यू ऑफ वेयर हैव वी रीच्ड एंड हु हम्म नीड्स व्हाट हेल्प, किससे क्या नहीं हो रहा है. राइट So I think if we do that, then and stick to deadlines, that should be good. क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती है ह्यूमन बिहेवियर ना, कि मतलब विलिंगनेस टू हेल्प एंड आस्किंग फॉर हेल्प, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, आर वी ऑन ट्रैक, वी फॉरगेट, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, डिफरेंट पर्सनालिटीज. सो वीकली रिव्यू, राइट प्लानिंग टाइम एंड वीकली रिव्यू आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, perfect, perfect. Okay, so now this is absolutely new question because धंधे वाले हम सब यहाँ पे and सब लोग धंधा कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं but we all have a bigger motive in mind. But yet I want to ask this that are you guys money minded when we talk about the business? I mean आपके goals and motives clear हैं but in terms of business and normal personalities, are you guys money minded? I would say we love money, but we also know that money only comes when we add value to our clients. So yeah, we love money, but we are value focused. That's what I will say. Okay, Aditya. I would second that. One of the things that has been helping us in sustaining the business, we have kept money secondary and creating a difference and an experience and giving value to the clients
first as a Mm-hmm. priority. And there have been some situations जहाँ पे we've worked at minimal margins just because the client wanted us to do something there, Mm-hmm. and we focused first on building relationships and then Mm-hmm. asking for money later on, and that has worked very well for us. Yeah, you That's know, nice. let me give you an example, Sarthak. Let's say Sure. हम आपके क्लाइंट हैं, ओके, और हम आपके ऑफिस में आते हैं Right. और वहाँ पे एक दीवार है, उस पे लिखा हुआ है कि ओके, ये हमारे 10 क्लाइंट हैं, और इन 10 क्लाइंट से हमें इतना रेवेन्यू निकालना है इस साल में, और हम देखते हैं हमारा Mm. नाम लिखा हुआ है वहाँ पे और हमसे आपको इतने पैसे निकालने हैं। ठीक है। Okay. तो हमें कैसा लगेगा? हमें बहुत बुरा लगेगा, ठीक है, कि मतलब हम क्या मनी मशीन है यार। और बट इफ वी सी एंड देयर इज अ वॉल जहाँ पे सारे क्लाइंट्स के नाम लिखे हुए हैं और उसके आगे आपने लिखा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू सार्थक इज गोइंग टू प्रोवाइड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो Hmm. हमें बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह यार, सार्थक हमारे लिए वैल्यू क्रिएट करने वाला है। So that is what we do. We don't make revenue targets, we make value targets. And whenever anybody from our organization is going to speak to a client को meeting के लिए जा रहे हैं कुछ भी, these are the conversations we have with each other. We ask each other, okay, so today what is the value that you're going to add to this client? Right. हम ये नहीं पूछेंगे कि कितने का बिजनेस लेके आ रहे हो, what is the value that you Right. are going to add to that client, and that's how we are the right consultants for the right organization. Okay. Okay. So And यहाँ money पे अब is मैं the बहुत बिजनेस byproduct वाला of क्वेश्चन पूछने that. वाला हूँ. हाँ जी. No, sorry, go Right. ahead. Right. Right. So I was just यहाँ पे saying the बहुत money is the byproduct. हाँ. It's okay. Yeah, I get that. मतलब इंडिया में तो डेफिनेटली इट्स अ बाय प्रोडक्ट, बट यहाँ पे एक बहुत बिजनेस वाला क्वेश्चन है. इट्स लाइक कंप्लीट धंधे वाला क्वेश्चन है ये. Hmm. तो मैंने आई वाज रीडिंग सम सेल्सy बुक, ठीक है, जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट प्रमोटिंग सेल्स एंड हाउ सेल्स गेट्स डन एंड मतलब ऑब्वियसली वो पूरे अमेरिका के बेस्ड थी दैट हाउ सेल्समैन वर्क. तो उसमें से मेरे को पढ़ के ये बात समझ में आई कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू एनीवन आउट देयर एंड यू वांट टू मेक अ सेल, Hmm. you need to create the interest according to that person, Hmm. कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है एंड यू नो तुम्हें कैसे फायदा होगा. दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू रीच टूवर्ड्स अ पॉइंट वेयर यू कैन क्लोज द सेल. Yeah. सो ये जो आप करते हो ये सेल्स के लिए है या एक्चुअली वैल्यू एडिंग के लिए, या फिर द ओनली पॉइंट इज नहीं कि हमें लाइक बिजनेस आएगा आएगा, हमें उसके लिए जाना है वैल्यूज के लिए. सो व्हाट इज योर थिंग? यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ आपके क्वेश्चन से, क्योंकि मतलब इवेंचुअली तो बिजनेस तभी चलेगा जब धंधा आएगा, और धंधा तभी आएगा जब हम वैल्यू क्रिएट करेंगे, तो मेरा आंसर तो अभी भी सेम है। आई डोंट नो व्हाट शुड आई से डिफरेंट। नहीं बट देखो, एक होता है ना मोटिव, ठीक है, हाँ, मोटिव और इंटेंशन की बात कर रहा हूँ मैं. हाँ, व्हाट इज द मेजर इंटेंशन, धंधा या एडिंग एडिंग वैल्यू? देखो, तो हम एक और चीज जो फॉलो करते हैं वो ये होती है कि यू नो, आई एग्री विद यू कि यू नो मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों का भी हमारा गोल्स है ये। आई एम अ हाँ बाइकर, जी. मुझे बाइक्स का बहुत शौक है। राइट. मतलब मेरा बस चले तो मैं अपने सारे पैसे महंगी से महंगी बाइक खरीदने में लगा दूंगा, ठीक है। घर में लेकिन गाड़ियां देखी है मैंने सिर्फ आपके. अरे, यू हैवंट सीन माय बाइक? आई हैवंट सीन द बाइक से. ओह गॉड, यू शुड कम। you come back, लॉकडाउन कर ले दो, come back, I'll show you ठीक my bike. And है. ओके. yeah. So anyway, coming back to, you know, when we do a team meeting, we also talk about what are your goals, you know, and what are your materialistic goals, सबके टीम में क्या क्या है। एंड जब हम राइट. अपने वो गोल्स लिख लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खरीदना है, उसके बाद वी अगेन देन क्रिएट अ कलेक्टिव विजन। ठीक है, अगर अगर इंडिविजुअली हमें ये चाहिए, तो टुगेदर हाँ. हम हाउ कैन वी मेक आवर ऑर्गेनाइजेशन, एनेबल आवर ऑर्गेनाइजेशन इवन मोर, that we get that kind of a business by adding value to our clients, coming back to the same thing. ओके. बेसिकली हम मतलब आपकी बात कर रहे हो जिसको मैं बहुत सिंपल शब्दों में रखूंगा, पैसा अपने आप आएगा, करो वो काम जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो. आपको खुशी मिलती है एक सर्विंग अ बिगर पर्पस एंड मेकिंग अ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ, एंड दैट इज हाउ यू ड्राइविंग मनी Yeah, and you know what, इनडायरेक्टली. Sarthak, राइट. now I हाँ remembered जी. something. मेरे एक अंकल है, you know, one of my mentors again. Uh, राइट. और वो अगेन विंटेज, उनका भी एक बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस, ओके। तो उन्होंने मुझसे ओके. एक चीज शेयर करी थी। उन्होंने एक बार पूछा मुझसे, निखिल, डू यू वांट टू बी रिच? बहुत पहले की बात है। मैंने हाँ. कहा व्हाई नॉट, एंड ही सेड राइट. मेक योर कस्टमर रिच। राइट. तो बस हम वही फॉलो कर रहे हैं। I have heard that. I've heard that. I've heard. That's nice. That's really nice. Right. So that has been a very insightful, and I don't think so कि मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन बचा है जो कि मैं पूछूंगा, because मुझे पता है अब सारे आंसर्स घूम फिर के ही निकलेंगे.
So, but yeah, any other entrepreneurial tip that either of you would want to give to the listeners out there, कि when you're doing the business, because आपकी journey से हमारे को, like personally, I have got a lot of points which are good for how to maintain a team, how to work in team, how a partnership can work. So that has been really insightful for me, honestly. But on the uh, bigger objective and the looking at it from bigger perspective, any business mantra or any entrepreneurial tip that you would want to give? I think what I would say is the mindset of abundance. और ये सुनने में जितना बड़ा ज्ञान लगता है, ये उतना ही सच Mm-hmm. है कि स्केर्सिटी मेंटालिटी के साथ बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता. And if I think that there is enough available for everybody, then we should start sharing. There are so many tools available these days on social media everywhere. Start sharing what you know, and then the people who resonate with you will, start joining you everywhere. So that abundance is required. Sharing that, the more I share, the more I get. Whether it's with your team or Right. with everybody outside. Perfect. Perfect. Aditya, what would you want to say about it? I would say getting the solopreneur mindset out of the box. In simplest Mm-hmm. terms, one person is not responsible to run the company. The whole team Mm-hmm. is. जब वो एक बंदे के ऊपर दिमाग में रहता है ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, and maybe the person is too scared or too closed to express the vision in front of the whole team, that creates a Mm-hmm. disconnect between, let's say, the for example, let's say the CEO and the company. However, Right. if the CEO opens up about his vision, opens up about the struggles the company is facing, opens up about the challenges, and also shares the Right. vision that he has for the company, you never know, the team Mm-hmm. members might have a better idea than you to take this thing forward. You never Mm-hmm. know the challenge you were facing. This team member has a beautiful idea to a solution to that. So getting this idea of a solopreneur out of the mind and involving everybody, which I would say is a part of inclusive leadership, that you are not the Right. sole person responsible for the company, boss. Each and every employee in your company is responsible to create that shared vision. That's when you Mm-hmm. get everybody on the same page. That's when your people start to think about the bigger picture. You open up their minds to think big, not just for their own team, but for the team they're working with, for different departments in an organization. Everybody knows where they are going, why they're doing what they're doing, and they also start feeling value for the work they're doing. So I would say this Wow. concept of inclusive leadership needs to come in, and the solopreneur mindset needs to go out. That's an amazing way to put up this mantra. I actually love this. So, guys, there's just one thing that we do is that we ask our entrepreneurs that you recommend another entrepreneur whom you think should come on this podcast, and if whom you think has a very inspiring journey. So, whom you should जिसको आना चाहिए and बताना चाहिए. So, suggest me someone. I will call them here. ओके. एक आदित्य करेगा, एक मैं करूँगा. आदित्य. Okay. आ, यार मेरे दिमाग में अभी कोई है नहीं. मुझे आई नीड 2 मिनट आपको थिंक मिलते ऑफ हैं वन. 10 सेकंड सोचने के लिए, जब तक निखिल अपना सजेशन देंगे. अच्छा ठीक. निखिल, आप बताओ. अरे आदित्य, सुबह जो बता रहा था हमारा प्यारा दोस्त, रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा उसको? वो आप करने वाले थे ना. नहीं, मैं दूसरा कर रहा हूँ. अच्छा ठीक है. We'd like to recommend one of our friends. His name is Right. Ravneesh Wesley. He also runs Ravneesh. Okay. Ravneesh Wesley. He also runs a consultancy firm by the name People Strategist, and does a lot of transformational work in the field of leadership and business transformation. Okay. That's great. And Nikhil, whom would you, are you gonna recommend? So yeah, Ravneesh does similar work that we do. तो हमारा Right. कॉम्पिटिटर भी है, बट हम इतने कोलैबोरेटिव हैं कि हम उनके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं. नहीं, जमाना कोलैबोरेशन का, अब जरूरत है. इसमें कोरोना के बाद तो बहुत जरूरत है कोलैबोरेशन की.
The other one Right. is also a dear friend. Her name is Monisha Ashokan. She's running an organization where she does consulting on nutrition and I think holistic health. So yeah, I think she's amazing. So you can also reach out to her. Okay. Her organization We'll is called Nourish Me. okay. Organizing Nourish Me. Yeah. Okay. Definitely. So we'll reach out to her and we'll send the links once their podcasts are also up. Yeah. Thank you so much for recommending them. Oh my God. So that was a very, very insightful conversation, honestly. Like, and जितना मैंने आपके साथ काम किया है, so I also know आदित्य का pet word है, the bigger picture. I heard this word so many times, even while editing, and right now also listening to this, the bigger picture. So yes, and I would like to say, ki, guys, here and now is into team building and all the different activities which promotes a lot of team building. And I'm so sorry, मैं बहुत सारी चीजें भूल जाऊंगा मुझे सिर्फ team building याद रहता है ठीक है I know. but yeah, so if you're a part of MNCs or any kind of Fortune 500, because these people have actually worked with Fortune 500 out there, have been there with them, shooting all those stuff, and yes, it's always an amazing experience working with them. खाने को बहुत मिलता है बहुत मजा आता है honestly. So yeah, अगर आपको कभी बुलाना है for any sort of outing activities and stuff, please do contact them. And guys, do you have something for our listeners? So yeah, I think पहले तो मैं ही correct करना चाहूँगा कि we are not just a team building company. That is only one part of Yeah, what we do. I'm so sorry. Right. And we are into deep leadership transformation and personal transformation work. Along with that, we also believe कि personal transformation और leadership transformation के साथ साथ fun बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हम team effectiveness के साथ साथ team building और fun भी use करते हैं. So deep work, fun work, we do all of that. Yeah, and it'll be very nice to have more people जिनको जो हमारे साथ coaching experience करना चाहते हैं and more organizations who want to see what amazing work we do with leaders and teams. So yeah, it'll be very nice to get in touch. In fact, to That's add that. to that, we have also started doing a lot of open workshops, and the response have been pretty great. So we Yeah. invite you to have a look at that as well. That's great. So I'll leave a link to an open workshop in the notes below, so you can have a look. Subject to condition जब आप सुन रहे हो and जो link है वो expired ना हुआ. So yeah, whenever this gets released, do listen to this and do check out that if the link is available. Otherwise, contact them directly and you can definitely attend some of the other upcoming workshops. Yeah. So now I want to thank you guys. Thank you so much, Aditya and Nikhil, for joining in me on this podcast and your journey and your conversation. This has been very, very insightful, as I already told, and this has been very much like enlightening for me in terms of team building and बहुत कुछ टीम के बारे में सीखने को मिला. I mean, probably those factors जो शायद से मैंने अभी तक खुद से भी नहीं सोचे थे, and somewhere in the subconscious they were lying dead, but you guys have made them alive and active now. So I can think about them very much more likely. I want to thank you so much again for coming in. So for Great. all Thank the you. GAN, we'll send you the bill shortly. Let us know with GST or without GST. Surely, surely, surely. Thank you so much for We'll having do us. it, guys. Hmm. Thank you so much. Thank you Thank you, so much. Sarthak. Have a good day. You Thank too. you. I hope that you're able to take back something insightful from this podcast and apply it in your life to be a better version of yourself and add to your Dhandho Soch. If you know someone whom you think should feature on my podcast and has a very inspiring entrepreneurial journey, then do drop me a DM on my Instagram, SarthakVarshny. Sarthak Varshney. Yeah, that's me. I'm the founder of SV Clicks, and SV Clicks is the producer of this show. You can find me on Facebook or LinkedIn as well with the same name. If you're willing to listen to more of such unheard, inspiring stories of the entrepreneurs, then don't forget to follow us by pressing that follow button on your podcast screen. Thank you for being such an amazing audience. Keep learning, keep growing. We'll be back soon. See ya.